Thank you, Darshanji. What a treat it has been, and to the principal and to all of you. I don't think we in the audience, as young students who were mostly all of you born many years after Kargil, or the rest of us who were young when Kargil was taking place and have built careers subsequently, have ever seen the people who were the frontline commanders sit before us and actually explain with maps and photographs what exactly was happening. This was a treat for the eyes, it was a treat for the sights, and hope it goes into permanent audiovisual record for history. Let me just add context to what we've all seen during the course of the day. Why are we here? What are we here to discuss? What is the purpose? What's the mission that we've gathered all these war heroes, the rarest of the rare war heroes, and brought them with students? Let me try to put some context. Let's take you back to the October of 1947. It's a world in turmoil. A great war has just ended. 60 million people have died. We always look at the context of the casualties in Europe or in the Pacific theater. We forget the casualties in India. 4.5 million killed just in Bengal due to the policies of a colonial government that shipped wheat to theaters rather than feed the people of this country. We have a country that has gained independence yet has been partitioned by an outgoing colonial regime. We are in the midst of actually creating the union of Indian states. It is almost unimaginable for anybody born and brought up in the last 20, 30 years in India what that felt like. That India as a geographic entity does not exist. It is an idea. It is an idea that needs to be translated in Hyderabad, in Kashmir, in Junagadh, in Goa. It's an idea that needs to be created on the ground. And there are many people who don't want that idea created. So it's the October of 1947. India as a country is 3 months old. The Pakistanis, under their establishment orders, have already invaded Jammu and Kashmir. The entire armed forces of the then Maharaja Hari Singh have mutinied. The Commander-in-Chief, Brigadier Rajendra Singh, only has 200 men in his command. He is then given an order towards the end of October 1947. And the order reads as such, and I can remember it. Brigadier Rajendra Singh is commanded to hold the enemy at Uri at all costs and to the last man. Now I want all of you, especially the young children, to ponder what at all costs and to the last man means. It means you're being ordered to go and die. That's what it means. It makes you shed a tear so many years later. It sends a shiver through your spine. And I went through this experience reading this order because there was a context to why that order was given. Let me put that context on why we fight wars. What is defense? What is the reason we put men and women in uniform and tell them to go and die for us? What is the reason? Listen to this. This is from a book written by B.K. Gupta. It's called Forgotten Atrocities. And I quote, "Some tried to leave Mirpur for Jammu by bus. The Pakistanis waylaid that bus on the way to Jangar, robbed and killed all the passengers. They ordered the driver to return the bloody bus to Mirpur city, filled with dead bodies. Only 2,500 out of 25,000 Hindus and Sikhs escaped. The Pakistanis ruthlessly kidnapped and butchered the remaining over 22,000 residents. The number of women abducted from Mirpur ran into thousands. They shamelessly paraded them and sold them in the bazaars of Rawalpindi. The barbarities that they committed upon civilians put to shame the worst orgies of violence committed by the hordes of Genghis and Tamerlane." Here's another small passage written by V.P. Menon, who was the Secretary of State at that point of time. "On the 8th of November, Indian forces occupied Baramulla. When the Indian troops entered the city, they found that it had been stripped by the tribesmen of its wealth and its women. Out of a normal population of 14,000, only 1,000 were left.
The devastation by the raiders was indeed ghastly, reminiscent of Nadir Shah's sacking of Delhi. So what happened in Mirpur, in Baramulla? None of us know. We don't study it. Hardly any of these books are in publication still for us to read. So I'll take you back to that order. Hold the enemy at all costs and to the last man. Many years later, when I am now a journalist, I read this and I said, let's retell this story. Karan Singh is still alive. Brigadier Rajinder Singh's daughter is still alive, the youngest daughter. We found her, we found his grandchildren, and we put them on a telecast. And his daughter was telling me that my father very rarely came home for lunch. That day he came home. And he'd already received the orders. My mother knew something was wrong. And she asked, if you leave, what about us? He told his family, 4 children and wife, told his wife, you always know best what to do. And he left whistling the charge of the Light Brigade. He was dead 3 days later in a rice field in Uri. So I'm sitting with war heroes. Let's get into the moment of who these people are. It's impossible for the rest of us to comprehend in the trivial travails of our lives what that actually feels like and what this is for. I want to introduce a very young man. His name is Athar Agarwal. He's the school captain of Welhams Boys. Athar is sitting in with me to add perspective. Athar, what do you know about 1947, October, the invasion of Kashmir, General Cariappa, the repulse? What do you know about it? Thank you, sir. So, as I know about Kashmir is that it was a conflicted area since partition, because then the head of, as we know that Kashmir existed as a princely state. So, the Raja Hari Singh did not sign the instrument to be included in India, which started the initial conflict. It was the tribal militants hired by Pakistan which initiated this conflict in Kashmir, and as a result, state armies were included in the conflict. Then, seeing the defeat, Raja Hari Singh reached out to the central government, the then interim government, which then intervened once the instrument was signed in. And post that, we tried to reduce the conflicted area and get Kashmir into our hand. But at that time, the ceasefire was announced and the line of control was established. You know, 1947, the winter thereof, a vacillating Maharaja for his own whims and fancies does not want to sign an instrument of accession and left us with 80 years of the requirement of heroes to fight over an undemarcated borders. So, Athar, that's quite a lot. But very few of you would actually understand what really happened, what took place. And it's in that context that 80 years later, what we are here to discuss today was taking place. So now let me introduce something very special, because you've already met and spoken to these people. Ladies and gentlemen, there were 21 in the history of independent India. 21 Param Vir Chakras have been awarded. 14 of them have been posthumously. Only 7 people survived. There are only 3 living. And 2 of them are on the stage with me. I don't think this has ever been done before or ever experienced, let alone on television by an audience before. And context is very important. Because unless we put context, personalize who we are and what we are doing, and I'm going to ask these people to tell us their stories. My school, alma mater, which I share with Colonel Wangchuk, had a military history seminar, not of this scale, last year. And I was doing audiovisual presentations for it. In the course of it, I was doing a series on an individual by the name of Flight Lieutenant Tanmay Singh Dandas. Flight Lieutenant Dandas was shot down while attacking enemy railheads in Narowal. And he was considered to be taken prisoner of war. He was one of the missing 54.
Having studied all my life about the missing 54, I did not know one of them sat in the same classroom as I did. Puts life into context. So let us put things into context. Colonel Sonam Wangchuk, the Lion of Ladakh. I interviewed him for the first time in 2001 when I was 16 years old. I was the same age as this boy. I've not forgotten that day. I want to ask you a very personal question, sir, before I come to the others, and we'll have this conversation in Hindi and English. Why the army? Why the armed forces? Actually, while doing my schooling, I was I would say, very physical person. I was an athlete in my school, and any kind of physical activity, competitive, it enthused me tremendously. So at a later stage, I never knew that I'm going to join army. It was after my graduation, or while I was doing my graduation from Shri Venkateshwara College, that a cousin of mine, Major Wangchuk, then he was in Corp. So I used to interact with him a lot. And one day he said, Sonam, what are your plans? So I was not very sure, though physically I was very gifted, I would say. I said, nothing as of now. I have not planned my future. So he says, Sonam, I think armed forces is going to suit you tremendously for two reasons. Firstly, he says, physically you are very fit. So that is going to be, a fantastic thing for you as an army personnel. You will do very well in the armed forces. And secondly, I was an introvert, absolutely. I used to shy away from, people. I never used to interact with them. My parents, they had a, huge problem with me. Whenever guests, they used to come to my house, we used to, my two sisters, everybody, all of us, we were same. We used to run away, and thereafter, mother, she used to be searching for us. So he said, "Dusra ye tera problem hai, that social hindrance, which is going to impede your progress in future. I think it is going to be taken care of, because as an army personnel, you are a commander. You are going to be a leader of men. You will have to command them, motivate them, and win battles. So I think it is going to be exceedingly good for you." So that's where the quotes struck. I felt, I am in one with him, and that is how I went for the armed forces. And never looked back. So these two gentlemen have already been introduced. Honorary Captain Yogendra Yadav and Subedar Major Sanjay Kumar. Now, in the previous session, you saw that of some of the war heroes, especially for young children sitting here, when you win a Vir Chakra, a Maha Vir Chakra, a Param Vir Chakra, the army publishes a citation, which is a record of what act of gallantry for which they are granting you and awarding you that medal. So I'm going to request our school captain to start with Subedar Major Sanjay Kumar. It's a very brief citation. Could you read this out to us, please? Sure, sir. Subedar Major Sanjay Kumar volunteered to be the leading squad of the attacking column tasked to capture area flat top of point 4875 in the valley on 4 July 1999. During the attack, when enemy posed stiff opposition and stalled the column, Subedar Major Sanjay Kumar, realizing the gravity of the situation and with utter disregard to his personal safety, charged at the enemy. In the hand-to-hand combat, he killed 3 of the intruders and was himself seriously injured. Despite his injuries, he charged onto the second bunker. Taken totally by surprise, the enemy left behind a universal machine gun and started running. Subedar Major Sanjay Kumar picked up the UMG and killed the fleeing enemy. Although bleeding, he refused to be evacuated. The brave action on his part motivated his comrades, and they took no notice of the terrain and charged onto the enemy and wrested the area flat top from the hands of the enemy. Subedar Major Sanjay Kumar displayed gallantry, cool courage, and devotion to duty of an exceptionally high order in the face of the enemy. Thank you, Azhar. Sanjay ji, 4 जुलाई का दिन, क्या ऑर्डर मिले थे आपको? क्या माहौल था? वेदर कैसा था? माहौल तो काफ़ी अच्छा था,
क्योंकि जब आप किसी चोटी पे बैठे हैं और सामने दुश्मन हो तो काफ़ी जिसको बोलते हैं डर भी लगता है और कुछ करने के लिए भी आपके मन में उत्सुकता रहती है। क्योंकि दिन का समय जब 4 जुलाई को रात को ऑपरेशन करना था लेकिन नहीं कर पाए, 5 तारीख को जो दिन को ऑपरेशन करने का जब टाइम आया तो मैं तो ये कहूँगा कि जब तक डर उस टाइम तक था हमारे अंदर, जब तक हमारा और दुश्मन का बिल्कुल क्लोज सामना नहीं हुआ। जब दोनों का आमना सामना शुरू हो गया तो डर भी खत्म हो गया और कार्रवाई शुरू हो गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ था? कितने हाइट पे थे? दुश्मन तो हाइट में है और हम लोगों ने नीचे से, जैसे आप सब जानते हैं कि 2 दिन की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग ऊपर पहुंचते थे। तो 2 दिन की लड़ाई जो लड़नी है वो पहले वहाँ के मौसम के साथ, पहाड़ियों के साथ लड़ने के बाद तीसरे दिन या चौथे दिन जाके हम लोग कांटेक्ट होता था दुश्मन के साथ जाके, तब जाके ऑपरेशन लॉन्च होता था। जो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको हम कैसे समझाएं कि आपको पता है कि दुश्मन उस हाइट पे है, आपको पता है कि आपकी पलटन अटैकर है तो डिसएडवांटेज पे है, इंटेंस्ड पोजीशन है, वेल सप्लाइड पोजीशन है, आपके मन में क्या सोच रहा था, क्या प्लानिंग थी, क्या इंस्ट्रक्शन थे, आपको क्या ऑर्डर्स मिले थे एट दैट टाइम? देखिए ऐसा है कि जो प्लानिंग करने का काम हमारे सीनियर्स का था और जो प्लानिंग उन्होंने की उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारा था। तो हमें सुबह जो आदेश मिले थे जब फायर बेस से जनरल जोशी साहब के द्वारा दिया गया, नीचे से आरटी स्पोर्ट मिला, तो हमें आदेश यही था कि जब फायर स्पोर्ट मिलेगा और दुश्मन का फायर जब बंद होगा तब आप लोग यहाँ से एडवांस करोगे। तो जो मैं डर की बात कर रहा था तो डर उस टाइम तक था जब तक हम यहाँ बैठे थे और दुश्मन ऊपर बैठा था, और जब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो गया तो डर भी खत्म हो गया और हमारा जो एडवांस था वो कंटिन्यू जारी रहा। क्योंकि उसके बाद हमें जाने का रास्ता तो मिल गया लेकिन आगे रास्ता खुद बनाना था सबको, और दिन का समय था और दुश्मन हाइट पे बैठा है तो नीचे से आप समझ सकते हैं जब जा रहा कोई तो बिल्कुल ग्राउंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी उठेंगे तो वहीं से गोली आ जाएगी, क्योंकि वहाँ 2 साइड में दुश्मन था। पिंपल जो पोस्ट हमने लेना था पॉइंट फॉरवर्ड 75 का वो तो है ही है, उसके साथ में जो 17 जाट जिस पे सेम टाइम पर अटैक कर रही थी वो भी हमारे ऊपर फायर डाल रहे थे, और ज़्यादा खतरा हमें पिंपल 1 और 2 से ज़्यादा था, क्योंकि उसका आइडिया नहीं था कि वो कहाँ से फायर कर रहा और किस इलाके में है। ऊपर वाला तो हमें पता है कि कहाँ से फायर करेगा, तो उन चीज़ों से बचा के हम लोगों ने ऊपर तक पहुँचना था और फिर जाके हैंड टू हैंड कार्रवाई करके संगड़ को दुश्मन से आज़ाद करवाना था। अथर हैज़ आपके लिए सवाल है अथर से। अथर सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोमेंट जब आप इंजर्ड हुए थे एकदम, जब आपको बुलेट फायर हुई थी, तो आप किन इमोशंस के थ्रू जा रहे थे और आपने उस टाइम में कैसे डिसीजंस बनाए? क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और उस टाइम आप अपनी लाइफ के लिए नहीं बल्कि और लोगों की लाइफ के लिए भी अकाउंटेबल हैं। देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि मेरे साथ के जो 2 साथी थे राइफलमैन प्रवीण और श्याम, दोनों शहीद हो गए थे, हम लोग इंजर्ड थे, मेरे साथ और दूसरे मेरे साथी थे, लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे थे कि ना तो यहाँ से पीछे आ सकते थे, सिर्फ एक ही रास्ता था कि आगे जाके। तो पहले तो हमने दुश्मन को काफ़ी देर तक ये एहसास करवा दिया कि जो यहाँ थे वो सब मर चुके हैं, जिसको बोलते हैं दर्द को पी गए। सब के सब प्रवीण और श्याम तो शहीद हो गए थे, लेकिन जो बाकी के लोग जो थे, जो इंजर्ड थे, उनको गोली लगने के बाद भी वो चिल्लाए तक नहीं है। ये नहीं उनको पता था कि अगर हम चिल्लाएंगे तो दुश्मन को हमारा जो लोकेशन है या दुश्मन को ये पता चल जाएगा कि ये अभी भी जीवित है गोली लगने के बाद। तो उनको एहसास करवाना था कि आप लोग जो यहाँ था, जो लोग आए थे वो मर चुके हैं। तो सभी ने तकरीबन वैसा किया और दुश्मन को हम एहसास करवाने में कामयाब हुए। गोली लगने के बाद दर्द तो सबको होता है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता। एक सुई और मच्छर काटने से दर्द होता है, वो तो गोली थी। 4 गोलियां लगने के बाद दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन दर्द से ज़्यादा हमें ये था कि अगर
हम चिल्लाए और उसको हमारी लोकेशन बिल्कुल एग्जिट पता चल गई और ये भी पता चल गया कि अभी तक हम जीवित हैं, तो वो कुछ और कर सकता है। आप उस टाइम पे कर क्या, गोलियां कहाँ लगी थी आपको? गोलियां लग चुकी थी टांग में, मेरे घुटने में है, इधर साइड में है। तो गोली लगने के बाद हम वहीं लेटे रहे जहां थे, जहां गोली लगी। बस एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे थे आप? नहीं सर, तो इशारों से बात हो रही थी? ओनली जितनी भी कार्रवाई हम लोग करते थे वहां पे, क्योंकि दिन का टाइम था, तो कंपनी कमांडर के पहले से ही आदेश थे कि जो भी कार्रवाई होगी साइलेंट होगी। तो हम जब भी नजरी मिलाप हमारा एक दूसरे साथियों से होता था तो हम इशारे से ही बात करते थे, यहाँ तक कि सेट का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। आपको पता था रेकी हुई थी, कितने लोग हैं अंदर? नहीं, रैक की अंदर की नहीं हो पाती, लेकिन एरिया की रैक की जरूर होती है कि जो जब सुबह हमने ऑपरेशन लॉन्च करना तो उससे पहले जो एरिया था उसको देख लिया था कि कहाँ कैसा है और किस तरीके से हमें आगे तक बढ़ना है, तो वो तो सब देख लिया था। बाकी अंदर कितने हैं वो तो जाने के बाद ही पता चलता तो है। फिर आपने वेट करा कि आपके पलटन में 2 लोग शहीद हो चुके हैं, आप लोग सब इंजर्ड थे या कोई 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 बच गया था? नहीं, बाकी 2-3 लोग हमारे सेफ थे। सो 2-3 लोग इंजर्ड हैं, 2-3 लोग सेफ हैं। आपको पता नहीं वहाँ पर बंकर में कितने कितने लोग हैं। आपने कब अंदाज़ा लगाया कि अब हमने आगे ही बढ़ना है, बंकर की तरफ जाना है, जब यूएमजी फायर कर रही थी? देखिए, गोली तो सबको लग चुकी थी, 2-3 लोग जो सेफ थे हम लोग बीच में, तो पीछे ऑप्शन, मैंने जैसे आपको कहा कि पीछे आने का तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और जैसे यादव जी ने भी जब पीछे जब कहा कि हमारे पास सिर्फ एडवांस है, विड्रॉल नहीं। और दूसरी बात है कि ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद हम वापसी का सोच नहीं सकते थे, क्योंकि वहां से वापस आना मतलब आप अपने जो टास्क का या आपका जो कर्तव्य है उसको अधूरा छोड़ के वापस आना। तो गोलियां टांग में लगी थी, इसलिए सबको था कि हम आगे बढ़ सकते हैं और टास्क को पूरा कर सकते हैं, और सभी ने वैसा ही किया, आगे बढ़े और सेकंड बंकर जो था वहां तक पहुंचे और उसको भी वैसे ही बर्बाद किया जैसे पहले वाला बंकर हमने कैप्चर किया था। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हम कैसे समझाएं? हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्या होता है, प्लीज हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, हैंड टू हैंड ऐसा बोलें कि हमने जैसे कुश्ती के अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं वैसे तो नहीं होता, लेकिन हम लोगों को इतना था कि संगड़ जो थे दुश्मन के तो पहले ग्रेनेड से बर्बाद करते थे, जो बाकी बचते थे फायरिंग से उसको बर्बाद करते, और लास्ट में अगर आप संगड़ को तोड़ने के बाद आप अंदर जाने के बाद आपके पास राइफल के साथ बैनट है, तो बैनट के साथ चार्ज करके हम उसको बर्बाद करते हैं। अगर उसमें लग रहा है कि कोई जीवित है, वो हमारे ऊपर कुछ वापस हमला कर सकता है या कुछ कर सकता है, तो आप लास्ट में फायर ना करके आप बैनट फाइटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता कैसे चला कि भाई अब आप पोस्ट तक पहुंच गए हो और जो बंदा यूएमजी चला रहा है वो अब भाग गया है? देखिए, फर्स्ट बंकर पे तो नहीं पता चला था, क्योंकि फर्स्ट बंकर पे कंटिन्यू कर रही थी, फायर कर रही थी, तो उनको तो हम मेरे जो बाकी साथी थे उनके साथ मिलके हमने उस पर अटैक किया था। पहले ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड संगड़ के अंदर गिरने के हटने के बाद जब उनकी गन फायर करना बंद हो गई तो गन बाहर निकाल लिया, जो होल था उसका। गन आपने खींच के बाहर निकाल ली? हाँ, क्योंकि ऑप्शन और दूसरा नहीं था, क्योंकि जब तक वो संगड़ से हम गन नहीं हटाएंगे तब तक हमारे लोग या बाकी सेफ नहीं थे। वही मेन गन्ने थी दोनों की जो हमारा पूरा एडवांस को रोक के बैठी थी, तो वो हटाना सबसे पहले जरूरी था। और सेकंड बंकर पे जैसे आप बोल रहे कि भागना, तो सेकंड बंकर में हमेशा उनको लगता था जब हम भारी हो जाते थे, यानी जब हमारा अटैक एक बंकर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे कंटिन्यू अगर चलता रहा तो उनके हौसले टूट जाते थे और वो अपने लास्ट वाले लोग ऑटोमेटिक बिना लड़े भागना शुरू कर जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम अभी नहीं टिक पाएंगे, अगर इन्होंने 2 बंकर ले लिए तो अगले ये 2 और लेंगे। और सबसे बड़ा मुझे जो लगता था उसमें यही था कि जो उनकी लीडरशिप में सबसे पहले उनके कमांडर भागे, तो मेरे जैसा सिपाही कितनी देर बैठेगा वहाँ, जब उसको पता है कि ना तो मेरे पीछे कोई मेरा साथ देने वाला है, ना मेरे साथ वाला मेरा साथ देने वाला है, तो मैं कितनी देर बैठूंगा और कितनी देर लड़ूंगा। तो इसलिए भागने में वो आसानी उसमें ज़्यादा रहते थे वो, तो इसलिए वहाँ पे लास्ट में वो वेपन छोड़ के खाली ही भागना शुरू कर जाते थे, क्योंकि आप जब हाइट पे चले जाएंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम हो जाएगा, आप ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ज़्यादा वजन उठा के नहीं चल सकते, तो वो अपना हथियार उतर ज़्यादातर मैक्सिमम छोड़ के वहीं से जाते थे। तो हमें उसका ज़्यादा फायदा इसलिए मिलता था क्योंकि उनके जो वेपन हैं स्पोर्टिंग फायर के लिए सबसे अच्छे थे, और हमें स्पोर्ट फायर एक दूसरे को देने के लिए काफ़ी
ज़रूरत पड़ती थी उसकी। हमारे पास जैसे अभी मेरे मानो अगर मुझे फायर सपोर्ट देना तो मेरे पास AK-47 रहेगा तो उससे मैं ज़्यादा फायर सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। हाँ जी। लेकिन अगर उसका यूनिवर्सल मशीन गन वहाँ है तो मैं उसका फायर सपोर्ट देके दुश्मन को ज़्यादा देर से रोक सकता हूँ। तो आप उनकी भी मशीन गन इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, मैक्सिमम काफ़ी देर हम उनका ही फर्स्ट बंकर के बाद हम जब निकलते थे आगे तो उन्हीं का ही वक्त ज़्यादा मिशन और हथियार का यूज करना पड़ता था। सर, आप इतनी आराम से कहानी सुना रहे हैं। I just want you to imagine for a second. You've been shot 4 times. And then there's a bunker in which somebody has put their hand inside and yanked the machine gun out. Think about it. Okay, let me go back to Athar because we have another Param Vir Chakra with us. Athar, could you read out his citation, please? So, Honorary Captain Yogendra Yadav was part of the leading team of Ghatak platoon tasked to capture Tiger Hill on the night of 3rd July 1999. The approach to the top was steep, snowbound and rocky. Honorary Captain Yogendra Yadav, unmindful of the risk involved, volunteered to be in the lead and fixed rope of his team to climb up. On seeing the team, the enemy opened intense automatic grenade, rocket and artillery fire, killing the commander and 2 of his colleagues, and the platoon was stalled. Realizing the gravity of the situation, Sir crawled up to the enemy position to silence it and in the process sustained multiple injuries. Unmindful of his injuries and in the hail of enemy bullets, Sir continued climbing towards the enemy positions. Lobbing grenades and continuously firing from his weapon, he killed 4 enemy soldiers in close combat and silenced the automatic fire. Despite multiple injuries, he refused to be evacuated and continued the charge. Inspired by his act, the platoon charged onto the other positions with renewed punch and captured the Tiger Hill top. Honorary Captain Yogendra Yadav displayed courage, indomitable gallantry, grit, and determination under extreme adverse circumstances. We are honored to have you, sir. योगेंद्र जी, दिनांक करीबन सेम है, 3-4 जुलाई। क्या हो रहा था उस टाइम, हमें समझाइए। लेट्स रीलिव द मोमेंट। 3 और 4 जुलाई की वो रात जब भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर्स तकरीबन 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, ये 3 जून और जुलाई का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब उस समय वहां का रात का टेम्परेचर -20 था। अगर आधे घंटे भी कमरे से बाहर खड़े हो जाएं तो चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता था। हाइट ज्यादा थी, दुश्मन दूर तक देख सकता था, दूर तक देख सकता था तो दूर तक वो मार भी सकता था। इसलिए अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे। ये घातक प्लेटून को सबसे पहले हमला करना था, जिसके टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और हमारे जो उस घातक को सपोर्ट देने के लिए डेल्टा कंपनी, जिसका कंपनी कमांडर कैप्टन सचिन निम्बालकर। तो 2 रात और 1 दिन का वो सफर तय करने के बाद तीसरी रात का तो वो मंजर वो जीवन के आखिरी पलों तक कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया, हमारी टीम का रास्ता कट ऑफ हो गया और हम केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। उसमें से एक मेरा प्लेटून हवलदार मदन भी था। ऊपर चढ़े, ऐसे 4-5 मीटर का प्लेन स्पेस, सामने फिर दुश्मन का बंकर। हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और वहां पर जो 4-5 पाकिस्तानी जवान थे उनको पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि अभी आर्टिलरी का सपोर्टिंग या कवरिंग फायर नहीं हो रहा था। अभी जो भी करना था वो फाइटिंग फोर्स को ही करना था, जो लीडिंग अपने फॉरवर्ड में चले गए उन्हीं को करना था। वहां से सर ये 4-5 पाकिस्तानी जवान उसमें मारने के बाद
तो फायर हुआ, आवाज तो होगी। वहां से जो टॉप था टाइगर हिल, वो ऐसे 50-60 मीटर रहा। तो वहां तो उनकी बहुत भारी तादाद में डिप्लॉयमेंट थी। फायर खुलते ही उनको आभास हो गया, एहसास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा है, या इनमें से यहां पर इंडियन आर्मी पहुंच गई है। जो बहुत क्लोज थे हम उनके, तो उन्होंने ऊपर से फायरिंग करते हुए, पत्थर फेंकते हुए और हमारे ऊपर हमला बोल दिया। पहला हमला हम झेल गए, उनको नकारा कर दिया। अभी स्थिति क्या थी, क्योंकि आपके जो वहाँ पर सीओ थे, उनकी आई थिंक पहली फायरिंग में ही वो शहीद हो गए थे। नहीं, जो मेरी कमांडिंग ऑफिसर थे वो तो नीचे थे। यस। लेकिन यहाँ मेरा जो प्लेटून हवलदार था, जो मेरा टीम लीडर था, अभी तो वही हमारा टीम 7 बंदों की हमारी जो टीम थी, उसका लीडर वही प्लेटून हवलदार था। तो जब वो ऐसे नजदीक आए और आधाधुंध फायरिंग शुरू किया, तो ऐसी कंडीशन आ गई थी शुरुआत में कि एक कदम आगे बढ़ाएं तो हेड शूट हो रहा है, और एक कदम पीछे रखते हैं तो तब भी हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया था। फिर लगा यार मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, इनको मार करके मरेंगे। तो ऐसे जबरदस्त जब फायर हुआ, सबसे पहले एक मेरे नाम का एक योगेंद्र सिंह यादव था, उसकी यहां से ये उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी थी। फिर एक और साथी था, उसको पैरों में गोलियां लगी थी। तो एक मेरा क्योंकि ऐसे दबादब फायरिंग शुरू हो रहा था, एक एलएमजी, एक वेपन, एक स्नाइपर वाला था। एलएमजी के ऊपर उन्होंने आरपीजी का राउंड घेर दिया ताकि वो एलएमजी न्यूट्रलाइज हो जाए, फायर ना कर सके, उसका वो डैमेज हो गई। फिर उन्होंने स्नाइपर वाले को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो हम स्नाइपर वाले को हेल्प के लिए जैसे गए, उसने फायर खोला। तो फायर खोलते पहला ग्रेनेड का टुकड़ा आकर के घुटने के नीचे लगा, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा घुटने से पैर गया। नीचे गिरते ही फिर दोबारा से उसने ग्रेनेड फेंका, तो उसका ग्रेनेड का एक टुकड़ा यहां पर आकर के लगा और ये नाक से पूरा धार बहने लगी। फिर मेरा साथी जो मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहां पे गोली लगती है, उसका सर निकलता हुआ मैंने देखा। तो जैसे आप बैठे हैं, ऐसे मेरा ट्रेनिंग का साथी बैठा था, ग्रेनेडियर अनंतराम। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में से आकर के लेटता है। तब मेरे प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज भी याद हैं। उसने कहा कि क्या हुआ? मैं कहा सर दोनों बंदे तो शहीद हो गए। बोला घबराओ मत, मैं हूं। एक प्लेटून, एक जो लीडर्स, इतना कहना हम जैसे जवानों के लिए इससे बड़ी और क्या ताकत हो सकती है? बहुत बड़ी ताकत। ये अथर आपके लिए एक सवाल लेना। सर जब आप रात का टाइम होता है, आपको मालूम है कि जो अपहिल है उसके पास एक एडवांटेज है, तो आप इंश्योर कैसे करते हो कि आपकी उस टाइम विजिबिलिटी है और आपका जो गन चल रही है वो दुश्मन को ही जाके लगे? क्योंकि जब विजिबिलिटी नहीं है, दुश्मन के पास एडवांटेज है, उस टाइम में जब आपको मालूम है कि सारी चीज़ें दुश्मन के एडवांटेज में हैं, तो उस टाइम आपको क्या मोटिवेट करता है कि हाँ हमें उस जगह पे पहुंचना है और इतना इंजर्ड होने के बाद भी हमें वो कैप्चर करना ही है वापस? बिल्कुल, जो है दिन के अंदर तो सब कुछ पूरा फ्यूचर दिख रहा है ना, पूरा फीचर दिख रहा है, पूरी पहाड़ियाँ दिख रही, तो दिन में ही एक पूरा नेविगेशन से एक पूरा रूट चार्ट बना लिया जाता है, और उस रूट चार्ट के आधार के ऊपर रात को हमने सफर तय करना होता है। अच्छा, यहाँ देहरादून में तो धुंध पड़ता है ना? पड़ता है, पड़ता है फॉग तेरे से सब। अच्छा, जब शुरुआत में बैरिक से बाहर निकलता दिखाई देगा कुछ रात को? सर दिन में जब धुंध होता है जी कुछ नहीं दिखता, विजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर रुक जाना तुझे दिखने लगेगा। रात का समय ऐसा ही होता है, थोड़ी देर पहले लगेगा कि कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें चलोगे उतना दिखने लग जाता है जितने में हम चल सकते हैं। और रात को सुनता भी बहुत ज्यादा है,
और दिखता भी बहुत अच्छा है। वो बर्फ है, वहां पे कुछ भी हरकत होगी दूर से दिख जाएगा। तो वहां से सब कुछ दिखता था और उसी से हम आधार बना करके चलते रहते थे। तो यही है, हमें ऐसा लगता है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में बहुत कुछ दिखता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे वेदर इतना ठंडा था, हमारे लिए एक टफ सिचुएशन थी, तो जब वहाँ ऊपर स्टेशन है ट्रूप्स, पाकिस्तानी ट्रूप्स, उनके लिए भी तो सिचुएशन ही डिफिकल्ट होगी, क्योंकि इतने सप्लाईज वहाँ तक पहुँचाना कितना आसान था, तो वहाँ पर इतने सारे लोग ठंड को कैसे सर्वाइव कर रहे थे? वो पाकिस्तानी जी यार, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, बाकी मैं बताता हूँ। उन्होंने पूरा वहां पर बंकर्स बनाए हुए थे, शेल्टर टाइप में बना लिए थे। तो स्टॉप जल रहे हैं, कुछ सिगड़ी जल रही हैं, उससे एक डिफेंस बन गया है। तो डिफेंस में बैठना, उसमें सरवाइव करना आसान है, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंडियन आर्मी थी वो नीचे थी, और ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वो ऊपर आराम से बैठा है, देख रहा है, एक शिस्त लेकर के निशाना लगा करके फायर खोल रहा है। वो ओपन में तभी आते थे जब हम बिल्कुल उनके नजदीक पहुंच जाते, या हमारी आर्टिलरी लगातार फायर करती थी, तब वो ओपन में आते थे। उनके जो बंकर्स हैं वो डिस्ट्रॉय जब होते, बाकी तो वो आराम से बंकरों में बैठे रहते थे। और हमें थोड़ा सा दिक्कत इसलिए थी, जब हम रुकते थे तब सर्दी लगती थी, बाकी चलते चलते तो पसीना आता था उस समय भी। तो यही था, क्योंकि फौज का जो सैनिक है उसमें इतनी क्षमताएं हो जाती हैं कि वो 55 डिग्री टेम्परेचर में भी अपना काम करने में सक्षम है, और -50 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने काम करने में सक्षम है। 21,153 फीट ऊंची पहाड़ी, -50 डिग्री टेम्परेचर, जिसको एक हिंदुस्तान का सैनिक कब्जा कर लेता है, नाम जानते? जी नहीं सर। क्योंकि आपने आज यहां पे पर्पज किस चीज का पर्पज था? मिलिट्री हिस्ट्री आपने कहीं रिसर्च नहीं किया? सर मैंने सुबेदार मेजर बाना सिंह का नाम सुना है। यस, ये वही तो है, ये वही है। तो ये हमें जानना होगा कि हम जिस चीज के लिए आज यहां पर आए हैं उसके बारे में जानना चाहिए। तो यही है कि वो हम चढ़ते गए, पसीना निकलता गया, पहुंचते गए, वो बाहर थे, फिर हुई गोलाबारी, और फिर आराम से ये तो है। अभी एक जवान ने सवाल किया था कुछ देर पहले, अरे सर वहां फौज में जाएंगे तो थोड़ा सा डर लगता है। क्यों लगता है डर? हो सकता है मौत हो जाए। मौत तो सबको आएगी भाई, लेकिन एक मौत ऐसी होती है जिसपे पूरा देश रोता है, दुनिया रोती है। अरे ऐसी मौत तो जो है बहुत खुश नसीब वालों को मिलती है। मरते तो डेली लाखों हैं, कोई पूछता है? और फौज मौत का कारण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो माँ बाप को फक्र होता है कि यार मेरा बेटा, एक माँ को गर्व होता है कि मेरे कोख से ऐसे बेटे और बेटियों ने जन्म लिया जिसने राष्ट्र के मस्तक को ऊंचा कर दिया। तो ये तो गर्व होता है। योगेंद्र जी, 17 साल की उम्र पे आपने फौज ज्वाइन करी। कहाँ से हैं आप? गांव कहाँ पड़ता है? क्यों सोचा आपने कि मैंने इस उम्र पे फौज ज्वाइन करनी है? मैं यूपी बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद अहीर से हूं, और इसलिए क्योंकि जैसे घर का माहौल होता है, पेरेंट्स जैसे लोगों से जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो वैसे ही भाव और भावनाएं हमारे मन और मस्तिष्क में अंकित होते हैं। तो मेरे पिता 65 और 71 में एज ए सिपाही 11 कुमाऊं के साथ एक युद्ध लड़ा था। वो अपने दोस्तों को बड़े फक्र के साथ बताया करते थे। 71 में हम लाहौर तक चले गए, वहां पर नलकूप के अंदर पाकिस्तानी फौज ने जहर डाल दिया, हमने 65 में ये किया। फिर ऐसे बोला खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, सोना नहीं मिलता है, सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो बच्चे थे, हम भी सोचते थे या बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कैसे आदमी जिंदा रहेगा, काम कैसे हो सकता है।
लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े हुए सर 6 में आया, तो 6 में एक ऐसे योद्धा की कहानी को पढ़ा जिसने अकेले पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो गया। जानते? नहीं जानते। वीर अब्दुल हमीद। उसकी कहानी को पढ़ा, फिर लगा ऐसे भी देश में युवा रहे, वो इंसान कैसा होगा। तब तो फिर एक पर्पज ही होगा फौज में जाना है। लेकिन क्यों जाना है ये भी पता था, युद्ध लड़ना है। You know, Battle of Longewala. It's very difficult to understand what motivates a person, because all of you right now are trials and tribulations. कि अभी गर्मी है, पसीना आ रहा है, आज का दिन ख़त्म करना है, फिर वापस स्कूल जाना है, वापस दूसरे शहरों जाना है, यहीं पर दुनिया बढ़ जाती है. How to think in a different orbit puts you as human beings into that orbit. Let's, for the record, Colonel Sonam Wangchuk, I'm going to request Athar once again, Maha Vir Chakra Awardee. Let's listen to his citation. On 30th May 1999, Colonel Sonam Wangchuk was leading a column of the Indus Wing Ladakh Scouts as a part of ongoing operations in Operation Vijay in the Batalic sector. The column was tasked to occupy a ridge line on the line of control in an area at a height of about 5,500 meters. This was essential so as to preempt its occupation by the enemy and any subsequent infiltration. While moving towards the line of control, the enemy ambushed the column by firing from a vantage position. In the process, one NCO of the Ladakh Scouts was killed. Colonel Sonam Wangchuk held his column together and in a daring counter-ambush led a raid on the enemy position from a flank, killing 2 enemy soldiers. The officer also recovered 1 heavy machine gun and 1 universal machine gun, ammunition, controlled stores and 3 dead bodies of the enemy personnel. Thereafter, the officer took stock of all forces along with the Chor-Batla axis in the Batalic sector and cleared the axis up to the line of control of all enemy intrusions at great risk to his life. Colonel Sonam Wangchuk displayed exceptional bravery and gallantry of the highest order in the presence of enemy fire and in extreme climatic conditions in the glaciated area. We are truly honored to have you, sir. Okay. This is a couple of months earlier from July. It's Batalic sector. You've been asked to occupy a ridge line overlooking the LOC. As you are moving towards the ridge line, you're ambushed. Can you take us back to the moment, sir? I'm assuming you remember it like yesterday. Actually, what happened, the prior day, I was tasked to take a surveillance and domination patrol to that area, so which I had already done. And I was supposed to carry out a recce also, because there was information, large number of enemy forces, they are concentrating in that area. And secondly, some sort of an alignment or structure is being constructed towards Chor-Batla. So these 2 information I was supposed to confirm. I did that. I climbed onto the ridge line along with a boy. There were around 1 JCU and 10 who was supposed to, establish an atom base, and thereafter they were supposed to carry out surveillance. So, being short of manpower, I just took a boy along with me. I climbed onto the ridge line. We were just 2 of us, and I started walking on the crest. So I couldn't see anything. I didn't see any kind of movement. I think most probably the enemy, they were smart. In case they were already there, I think they would have hidden themselves well. So there was no reaction from the enemy. I started walking on the crest line, and I was walking in front. And suddenly, I went inside a small crevasse, I think. Most probably I sunk, my neck deep, and I couldn't move. So the boy who was following me, he took me out. At that time, normally you are supposed to be, having ropes in order to secure yourself with each other, and thereafter you are supposed to be walking on these ridge lines, which in my case I was not doing so. And secondly, I would say, frankly, I had not done SPS training, which normally
any inducting unit it is supposed to do. Since I was a Ladakhi, I think most probably CEO would have felt he is a son of a soil and he does not require any kind of, acquaintance or familiarization with this sort of a terrain. So thereafter he took me out, and then realizing the dangers, I think further recce, I should leave it out, do it at another time, because since there was no activity, I came down. And around 4:30 in the evening, I reached the place from where I had started. It was Andenbrock, basically from where these operations, they were being conducted, onto a LSC, which was around 6 to 7 kilometers further away. So I had come down next day, around 9:30, I think must be, when I received information from a radio operator. He came running to me. He said, "Saab, ek bahut zaruri message aaya hai." So I asked him, "What is it?" He was huffing and puffing actually. So I came to know that these people, the OP party, they are trying to establish contact with me. So there was a Havaldar. He told me, "Saab, buri tarah se mar wo gir gaye hain aur pura dushman ka golabari ho raha hai." So I said, "How is the situation? Can you see the enemy?" As to his disposition and layout and all that, he said, "Saab, kuch bhi nahi dikh raha hai. बुरी तरह से फायर आ रहा, हम लोग बिल्कुल वो छुपे हुए हैं और आप कुछ करो नहीं तो बहुत मुश्किल है बचना." There were just around 10 boys along with a JCO. I really felt they are in mortal danger, because we had already learnt about Lieutenant Saurabh Kalia, the fate which he came to him. So I said, this sort of a thing. I'm going to interrupt you here. For a lot of young students, and for some of you it might be a very, very young age, perhaps your teachers or parents can help you out with. Read about Captain Kalia. Sir, please finish your thought. Okay. So they should not meet this sort of a fate. So I was really concerned. I spoke to my sub-sector commander and I told him, "Sir, this is the situation. I have to, rush. I've got some boys with me. I'll take a reinforcement." And he said, at that moment, he said, "The brigade commander is not able to, I'm not able to contact him. He's in a conference or something." Waited for about an hour. The orders, they did not come. So I'd already given orders to the boys. They had, collected the ammunition and they were well equipped and they were ready to move, but the orders, they were not forthcoming. So luckily, my wing commander, that is Colonel Chando, he happened to come on a visit, though he was not in the channel of command, operational command then. But, I told him, "Sir, this is the situation. I have to move because my boys, they are absolutely encircled. Anything can happen to them. The enemy forces, they are in an overwhelming number." So he thought for a moment. He said, "Sonam, come se come, you try and establish contact with one of the, company commanders who is ahead. I think most probably he can see the enemy." Try to contact him, but there was no response from him. And then I requested him, "Sir, मैंने कहा अभी आप please orders दे दीजिए, because बहुत late हो जाएगा. I should not get late. And later on फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या मुँह दिखाएंगे? I won't be able to show my face to the boys. As a company commander, you're sitting behind, and your boys, they're in mortal danger. In case anything happens, I'll not be able to face my boys, or the, once I go back to the unit, how do I face them?" So he thought for a moment and he said, "Ki Sonam, theek hai, okay, you carry on. ठीक है, मैं देख लूँगा यहाँ पे जो होता है, and I'll be answerable to the higher formation. You carry on with your task." I took my boys. There were around 25 boys with me, I think, including 2-3 JCOs. We moved. I think it must have been around 11 o'clock. We went at a good This is 11 at night? 11 in the night. No, morning. 11 in the morning. Daytime. It was absolute daytime. So I would have taken around 2.5 hours to reach, just about 700 to 800 meters short of the Adam base. So when I reached over there, the firing started. All hell broke loose. And still, since I felt the fire was not effective, I told the scouts rather, to keep advancing. So we advanced, would have gone around 100 meters or so.
when Havaldar Sivang Riksen, who was following me, he got a burst on his chest. Rather on his left side of the chest would have been his heart, and he went down. So immediately everybody, all of us, we took position, and two things came to my mind. At that time, firstly, I must do something about this injured boy. And secondly, there was a large gap between the main body. We were just 5 people who were caught in the ambush. So I felt the column which is trailing me, they should not fall into the ambush, because we would have brought more casualties in that case. So I didn't have any communication. There was no means of communication with the main body. So I had to send a boy. I sent a boy, told him, tell the JCO following us, कि ऊपर चढ़ के he'll try and neutralize the fire from wherever it is coming. And secondly, he will not take this, path or the route. And that boy, he went, and thereafter we tried to make the boy comfortable with whatever means we could. We didn't have much. We didn't have a nursing assistant, which we are supposed to normally in these cases. So we couldn't do anything. When I spoke to him, he said, "Saab, bahut thand lag raha hai. Sharir thanda ho raha hai." I could see his blood, spilling all over and getting red. So jaldi se the ground sheet was taken out, and thereafter we put a blanket over him, but he didn't survive for long. So now I was left with one boy only. I had to keep a boy with him, because till his last breath, I couldn't have abandoned him. So I had to keep a boy, Havaldar Kader, who was again a very sturdy NCO, a fantastic chap. I told him, iska dhyan rakhna in case you are able to evacuate him, when sun goes down, do that in the hours of darkness. And thereafter, I was in the absolute open. These people, they were sitting on the hillocks which were there. So I was very vulnerable. And at that moment, I really felt a wave of despair. And nothing came to my mind. So I spoke to Havaldar number 11, who was the number 1 scout. I said, यार बुरी तरह से फंस गए यहाँ पे, अभी क्या करना चाहिए? हम तो बचाने के लिए आए थे और खुद ही फंस गए और पूरे घिरे हुए हैं पाकिस्तानियों से, सर छुपाने की जगह नहीं है. And what he said was really fantastic. He said, साहब चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, मरना तो है, गोलियां तो आएंगी यहाँ पे, कम से कम आगे जाके हम अपने एडम बेस के साथ मिलाप कर लेते हैं, अपने लड़कों के साथ मिल जाते हैं, आगे देखी जाएगी. I said, it is really fantastic. Hats off to that boy. And that gave me a lot of courage. So we moved on. Aage gaye, I married up with the Adam base. And I, feel very fortunate, because had the enemy fired upon us, there was no means of saving ourselves. So it took me about half an hour to reach that place. And there was no fire from the enemy. We light Dogo, I came to the Adam base. There were 6 to 7 boys, and the OP party, they had taken off along with the JCO and LMG dead. We stayed there throughout the night. And thereafter then, I think it must have been around 10 o'clock when these people, they came down and they told a very, very, gratifying story. They told me, साहब, जब हम लोग ऊपर पहुंचे 5 बजे अराउंड पहाड़ी के ऊपर, तो पीछे से वो रिवर्स साइड से there were 4 to 5 Pakistani soldiers who were climbing up. We just, made a minute prior, they crested, and had that been the reverse, they would have bought it, but they were very fortunate. And they waited for these Pakistani personnels to come up within range, and thereafter 2-3 enemy personnels, they were brought down. Okay, so thereafter they kept sitting there for the entire day, and that at around 9:30 they started from there, and they were able to reach. And then you managed to capture one of or 2 of the machine guns. Yeah. That is then we moved up around 12 o'clock at night, as Yogendra PVC Yogendra brought out. Actually, you can see very clearly at night. And 31st was a full moon day, 30th rather. A large moon was shining. Every move of us they could see. And we were putting on, trouser, BD search and Bhalu jackets, which are absolutely, not merging with the background. Yeah, so they could see each and every movement of us. They kept on firing upon us, despite our attempts to climb the feature in front. So around 12 o'clock, we moved up and crested by about 4 o'clock in the morning.
And thereafter, then we were able to carry out a raid on the enemy, wherein we killed about 10 to 11 enemy personals. We exhausted our ammunition, and thereafter we started pelting them with stones and boulders from there. And in the process, we were able to kill 11 enemy chaps. Requesting anybody, especially the young students here, if anybody has any questions, now is a good chance to ask them, because in the larger context you've been listening to, and I'm hoping you've gotten a much greater understanding of what this war was about. If you've been listening intently, and I know it's been a long day and it's been a hot, sweltering day, but I don't think anybody watching or hearing this in the audience or watching this at home would not have been moved to tears. I certainly have been. We can't comprehend the kind of petulant issues we deal with in life to what life and death situations can be by choice. Anybody, any questions? Welcome to ask. Raise your hands, please. We'll get okay, there's a couple of hands raised there. Is it possible to get a microphone across there? Please give us your name as well before you ask the question. And I'll take 2-3 questions and get our panelists to answer them together. Good afternoon, sir. I am Arun from Mayo College, and I wanted to ask that how did the Pakistani forces make bunkers at the top of the hills and got all the resources there? Okay, Arnav. Okay, one more question and I'll put all of them together. Okay, there's another boy there. Good afternoon. My name is Arab and I am from Nirmal Ashram Gyandan Academy, Rishikesh. So my question is that what was the geopolitical impact of the Kargil War? Thank you. Okay, there's another boy here. Let's get a microphone here, please. Namaste, sir. I am Yash Tiwari from the Oasis. So my question is, what were the key challenges faced by the Indian Armed Force in their initial operations to recapture the ridgelines from the Pakistan regulars during the Kargil War? Okay, there's another girl in front who wants to ask a question. My question is to Colonel Sonam Wangchuk, as he mentioned his social hindrance and shyness. So after getting into the forces and performing leadership, how does that shape your personality and change you as a leader? Okay, let me take all these questions one by one. Okay, first let me start with Yogendra ji. Yogendra ji, बच्चे ने सवाल पूछा और थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट आप समझाइए कि ये कैसे हुआ कि वहाँ पर बंकर बना के इंट्रेंच पोजीशन बना पाए. इसका स्टोरी क्या है कि विंटर टाइम पे ये स्पीक्स खाली रखी जाती थी. प्लीज़ बच्चों को समझाइए प्लीज़. बिल्कुल, जो है ये दोनों देशों के बीच एक समझौता था कि ये जो पूरा रिज लाइन था, यहाँ पर सर्दियों के समय में दोनों सेनाएं ऊपर नहीं रहेंगी, अपने नीचे बेस कैंप में रहेंगी, क्योंकि सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है, जहाँ पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता था. तो उसी समझौते के तहत हमारी इंडियन आर्मी अपने बेस कैंप में थी, लेकिन पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की कुछ नीयत ही खराब थी, तो उसने अपनी पोस्टों के साथ साथ अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और हमारी पोस्टों के ऊपर भी आकर के कब्जा जमा लिया. सर्दी का 4-5 महीने का बड़ा कठिन वो समय होता है और उसने उसी दौरान हमारे तमाम पोस्टों के ऊपर अपना स्टॉकिंग किया, अपना बंकर्स को और मजबूत किया, अपनी मैन पावर को वहाँ से बिल्डअप किया. तो इस तरह से 4-5 महीने का उनको ये समय लगा और इस तरह उन्होंने हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा जमा लिया था, क्योंकि हम नीचे. Okay, that roughly, obviously not the best time for intelligence and people doing recce, because they manage during the winters to not only make the posts but even make sometimes concrete bunkers and supply themselves. Okay, what was the geopolitical consequences? So let's put this into context. This is 1999. This is just a few months after we've had atomic tests in India, in Pokhran and in Pakistan. This is a different place. This is the time of Bill Clinton in the White House. What was different then? It's in India that is, still emerging. It's still a much poorer country. What was the sense of India then when this war was being fought? The geopolitical situation at that time, as everybody knows, US basically it was supporting Pakistan, and it was for their vested interests that they were doing it. And once Kargil happened, Pakistan, it always wanted to internationalize the issue of Kashmir, and they wanted to include a third party
mediation, which India was not willing to. They were in for bilateral resolution of the problem. So once Kargil happened, our soldiers, they did a fantastic job on ground, whereas politically, I think on moral grounds and in every way, it was proved to the world that India is a very upright nation, and we didn't cross the LOC even after garnering victory, after having pushed the entire Pakistani intruders who were sitting on those vantage points. We took that moral stand. We said we are a non-violent country, and it really resonated with the entire international community, I suppose, at that time. And we didn't lose any territory as such. And at the end, when the ceasefire happened, the entire international community, it was with India. And Pakistan, what they were hoping for, it never happened. Okay, I'll just add some context worth researching. We'll take another round, a couple of questions before we wind up. So this is a different India. This is just 6-7 years since the great economic crisis in 1991. In Pakistan, Nawaz Sharif is Prime Minister. At this point of time, Musharraf is still the army chief. He would then become the dictator of Pakistan. India has just become a proven nuclear power with Pokhran. Vajpayee has come in. He is come in with the Lahore bus yatra. He wants peace, but this is happening behind his back. So the context of what was taking place was a lot different. The context of this recurring in the present situation would be a lot different. Let me put this question to Sanjay ji first. Sanjay ji, leadership capabilities. आर्मी में टाइम निभाने के बाद ये लीडरशिप कैपेबिलिटीज क्या सीख मिलती है हमें? देखिए सब, जिस सेना का लीडर सही है, सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकता है, वो सेना कहीं भी और कोई युद्ध हार नहीं सकती। अगर आप अपना भारत को ही देखोगे तो आज तक हमारा जो लीडरशिप है वो बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंच चुका है, और हमारे जो सेना है उसने हर मुकाम पे वो कर दिखाया है, और उन लीडर्स ने वो कर दिखाया है जो शायद नामुमकिन था। सब मिसाल बैठी हैं आप सबके सामने, जो उस टाइम पे कंपनी कमांडर थे, सीईओज थे, ब्रिगेड कमांडर थे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप? अपने बालाकोट की बात कर रहे हैं? सभी में ही लगा लीजिए, कहीं से भी। जब आप 62, 65, 71, 99, बालाजी या जहाँ भी, अब कोई भी ऑपरेशन किसी लीडरशिप के या उसकी प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता। कारगिल में जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान वालों में सबसे बड़ी कमी थी कि उनका लीडरशिप कमजोर था, क्योंकि उनका लीडर ही सबसे पहले उस पोस्ट को छोड़ के भागता था। हमारा लीडरशिप मजबूत था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो पीछे मेरे कंपनी कमांडर है या मेरे सीईओ हैं या मेरे पीछे जो भी है, जब मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। जो जवान आगे लड़ रहा, अगर उसको ये पता है कि मेरे पीछे मेरी ज़रूरत का सामान या मेरे ज़रूरत के हिसाब से मुझे वो चीज़ मिलेगी, तो मेरा जो लड़ने की ताकत है वो डबल रहेगी। जिसको पता है कि मेरे पीछे कोई है ही नहीं है, या मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो उसको टाइम से नहीं मिलेगी, तो वो कितनी देर लड़ेगा? Okay, so that's a lesson in team and leadership. Okay, how does a person who's otherwise introverted and shy come out into leadership roles? Army really taught me lots of things. Firstly, the leadership qualities, wherein I think for me the most important part was, communication, which I lacked tremendously. So once I was posted to Ukrul in CI grid, I had to take out lots of, patrols, and thereafter it became imperative that I brief the boys, I interact with the boys. They should see me as their leader. So that was only possible once you involve yourself at the word go in the entire activities which the battalion was carrying out at that time as a young
officer as a second lieutenant. So I had to stand in front of a column, and the JCOs, they were fantastic. They taught me a lot. These boys, these JCOs, they used to go into nitty-gritties of, the operations and the briefing. And initially, I never used to speak. I used to listen to them intently, because I know these people, they have the practical knowledge. These people, they are experienced. They've done, their work on ground. So these people, they know quite a lot. And I used to listen to them. And slowly, I started coming out of my shell. And then I, took this, briefing of the boys and all, very gradually and slowly, once I started understanding the nuances of the operations. And thereafter, secondly, we used to have lots of social, activities out there in our unit, especially, mess functions, parties, where you had to interact with lots of guests and interaction with the ladies and all. So that gave me a lot of opening and exposure. And I came up in that way. And secondly, after Kargil, once I got this award, I had to deal a lot with the media and so many other, platforms I got, where I got a good exposure. I had to speak in front of large gatherings like I'm facing today, and I'm speaking to all of you, which would not have been possible in, prior to my service exposure. Okay, the Lion of Ladakh, as he's well known. Ladies and gentlemen, for the 3 war heroes on stage and the many others sitting in the audience, I think they deserve a standing ovation from all of us. Many, many thanks for the service that you've done.